गौरव भाटिया, आपने लुटाया आशियाना, वो तो बेचारे पे कर रहे हैं, बट for the first time in Himachal Pradesh, salaries haven't gone out. Where should they turn? To the Congress party or to the BJP? I feel very sorry for my, co-panelist Sanjay Jha. I used to call him my friend, but lately I've seen that he doesn't even have rationale and logic in his argument. He said that the predecessor government is to be blamed. So fine, Congress party was contesting elections. They knew that the exchequer is left with no funds. Then why did they make these shallow freebie promises? And Himachal today is on the verge of collapse. I will tell you, 300 units of electricity free. Now, this costs a lot. It costs 18,000 crore to the state. Now, you have... Please, don't interrupt. Are you on a weak footing today? Let's not interrupt. It's a shorter debate, Sanjay Jha. Allow Gaurav Bhatia to complete his point. But why fake news? The BJP did the free electricity and water. So the second point, Navika, is ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं. And let me tell you, in Karnataka also, they made similar promises. Electricity will be free. They raised the tariff on electricity. In Himachal, they raised VAT on diesel products. And this is what Siddaramaiah had to say. And I'll end it at that. He said, where will I get the money from for freebies? Just because I said something during elections, part of election jumla. Do you think we can fulfill everything? We can't pay for something said during elections. This is Siddaramaiah saying. Well, let me ask Kamru Zaman Chaudhary. Kamru Zaman Chaudhary, khatakhat, 8,500 every month into women's accounts. Kya hua? Khatakhat to no salaries. नाविका जी बीजेपी सरकार में आई थी ये बोलकर सबके साथ सबके विकास, लेकिन इनका जो मेन मुद्दा है वो है जो हमारे साथ हम उनके साथ. वही हुआ. द फिस्कल टेररिज्म दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्रैक्टिसिंग अमंग द ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैज लेड टू सच ए प्रॉब्लम इन द स्टेट्स दैट आर रन बाय द ऑपोजिशन. बट क्लियर फैक्ट्स मींस need to be told on your television, the most watched English channel in India right now. The measure of whether a state is in deep financial trouble is the GDP versus the debt ratio. And among the opposition ruled state of Telangana, it is 25.3%. Karnataka is 27.5%. Tamil Nadu, it is 27.7%. The basic point that I want to give out here is that the wrong policies of the Himachal Pradesh government led by the BJP at that time, the total liabilities has risen to 87,788 crores. From 2018, it was 47,906 crores to 76,000 crores in 2023. And as my good friend Kamal hai. Flattery calling us the best channel will get you nowhere today, Kamru Zaman Chaudhary. खटाखट आप करें, सैलरी लोगों को आप ना दें, सारा ब्लेम बीजेपी को. हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये बहुत अच्छी पॉलिटिक्स है. मुझे लगता है आपको भी और मुझे भी ऐसी पॉलिटिक्स में घुस जाना चाहिए. नविका जी, सबसे पहले तो ये अच्छा किया कमरुद्दीन जमा साहब ने बता दिया कि देश का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला अंग्रेजी चैनल है, तो उसमें मैं हिंदी में समझाता हूं कि क्या ये कह रहे हैं और क्या सच है. कब सरकार आई थी सुखिंदर सिंह सुक्खू की? दिसंबर 2023 नहीं सर, दिसंबर 2022. 5 साल की ही सरकार होती है जिसके लिए ढेर सारे वादे करके आप आए. सरकार आप संभाल नहीं पा रहे हैं. अब सरकार करीब 2 साल होने जा रहा है तो कोलैप्स होने की स्थिति में. देश में सबसे ज्यादा अगर प्रति व्यक्ति कर्ज है 1,17,000. छोटा सा राज्य है लेकिन सबसे बड़ा कर्जा हिमाचल वाले अपने कांधे पर लेकर चल रहे हैं. उनके कांधे झुकते चले जा रहे हैं. आपने प्रियंका जी की 5 गारंटी के नाम पर हिमाचल के लोगों को बहुत कुछ बताया और उसमें एक बड़ा सा था ओपीएस. और मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि ओपीएस मतलब देश को बर्बाद करने वाली फाइनेंशियल क्राइसिस लाने वाली स्कीम होगी. और कर्नाटक के बारे में एक बात सबको ध्यान में रहे कि वहां 10 गारंटी दी थी और डीके शिव कुमार ने चुनाव के तुरंत बाद विधायकों से कहा फंड लेने मत आना, कांग्रेस की गारंटी पूरी करनी है. ये कांग्रेस की गारंटी राज्यों को बर्बाद कर रही है, देश को भी बर्बाद कर रही है. Well, from khatakhat to totally kaput,
That's the way Congress's schemes are going. Is this good economics which will give good politics? I don't know. It's a hope and a prayer that this economic model will survive. Do we want to live with this profligacy? It's a decision people of India will need to take. I am the future that was born 100 years ago. I am the purpose that emerged with India's independence to be a force for business that makes doing good our business. Towards an independence where knowledge sets us free. To think big and achieve bigger. To take India to the world and the world to India. Creating pathways of self-reliance. To stand for progress, the planet and the people. Towards a future made perfect. And be a force creating abundance. Because independence is not a moment in history. It's a never-ending path to prosperity. Aditya Birla Group, a force for good.